गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम माँ ट्यूटोरियल के इस वीडियो में नवोदय एग्जामिनेशन का मैथ वाला सेक्शन सॉल्व करने जा रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ, माँ ट्यूटोरियल एक डिफेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर रिटन एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन भी कराई जाती है और इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन भी कराई जाती है। जिन रिटन एग्जामिनेशंस की हम तैयारी करवाते हैं उनमें सैनिक स्कूल, आरएमएस, आरआईएमसी, नवोदय के साथ साथ एनडीए, सीडीएस, एफकेट एग्जामिनेशन के रिटन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराई जाती है। साथ ही साथ 11th-12th भी करवाई जाती है और रिटन एग्जाम क्लियर होने पे इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी कराई जाती है। तो चलिए, बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए हम सीधे आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो बोर्ड मास का है। अगर आपको बोर्ड मास का कॉन्सेप्ट पता हो तो सबसे पहले हम इस बार को सॉल्व करेंगे। इस बार को सॉल्व करने के बाद हम धीरे धीरे ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। जब हम इस बार को फोकस करते हैं तो हमें ये देखने मिलता है कि 4 - 1 जो कि होता है 3। अब 3 के आगे है माइनस और 5। 5 - 3 होता है 2। 2 के सामने है माइनस, तो 16 - 2 इज 14। 18 - 14 इज 4। 8 - 4 इज 4। तो जो आंसर होगा वो सी होगा। फर्स्ट का आंसर सी। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 33/40 टू गेट 11/40। तो हम इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिखेगी, 33/40 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, हमें क्या मिलेगा 11/40। तो अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये माइनस में है, उधर जाने पे ये प्लस बन जाएगा x, और 11/40 प्लस में है तो इधर आने पे वो माइनस बन जाएगा। न्यूमरेटर अलग है, डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए एलसीएम लेने की कोई दिक्कत नहीं आएगी। सीधा एलसीएम आ जाएगा 40 और 33 - 11 हो जाएगा 22। तो आंसर हो जाएगा 22/40 और 11/20। दोनों में से एक ऑप्शन जो कि अवेलेबल है हमारे पास 11/20 के फॉर्म में, इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसे सिंप्लीफाई करिए और आंसर बताइए। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस करा, अगर आपका बेस सेम हो, डिनोमिनेटर सेम हो, तो आप न्यूमरेटर्स को डायरेक्टली ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। 5 + 7 होता है 12, 12 - 3 होता है 9, 9 + 9 होता है 18, 18 - 1 होता है 17। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा 17/22। थर्ड का आंसर है बी। हम आगे चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 44 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि एक शॉपकीपर है, वो 1 रुपीज की, रुपीज 1 की 5 चॉकलेट्स खरीदता है। ओके, तो उसने 1 चॉकलेट कितने की खरीदी? 1 चॉकलेट उसने खरीदी 1/5 रुपीज की। ओके, ठीक है। और उसने बेची कितने की है? उसने बेची है 1 रुपीज में 4 चॉकलेट। तो एक चॉकलेट कितने की बेची है उसने? 1/4 रुपीज की। ओके, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि उसे प्रॉफिट बनाना है 125 रुपीज का। उसे प्रॉफिट बनाना है 125 रुपीज का। तो उसे कितनी टॉफीज बेचना चाहिए? पहले देखते हैं कि एक टॉफी बेचने पे कितना प्रॉफिट होता है। एक टॉफी बेचने पे प्रॉफिट कितने का होता है? देखिए, सेलिंग प्राइस है 1/4, कॉस्ट प्राइस है 1/5। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1/20। 1/20 का फायदा होता है एक चॉकलेट बेचने पर हमें टोटल फायदा कितना चाहिए? हमें टोटल फायदा चाहिए रुपीज 125 का। ठीक है, 125। अगर हमको 125 रुपीज का टोटल फायदा चाहिए और एक चॉकलेट बेचने पे 1/20 का फायदा होता है, तो चलिए पता करते हैं कितनी चॉकलेट बेचनी पड़ेगी। हम इसका एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। तो अगर मुझे हर चॉकलेट पे
एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर मुझे हर एक पेन बेचने पे 1 रुपीज का फायदा होता है और मुझे 10 रुपीज का फायदा चाहिए, तो मैं 10 को 1 से डिवाइड कर दूंगा। वैसे ही मैं यहाँ पर 125 का फायदा कमाने के लिए मुझे अगर एक पेन पे 1/20 का फायदा होता है तो मैं उसे 1/20 से डिवाइड कर दूंगा। आपको पता ही है, जब हम किसी फ्रैक्शन को डिनोमिनेटर में लेते हैं तो वो रेसिप्रोकल होके हो जाता है। तो 125 इंटू 20/1, इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2500। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि है 44 का आंसर। तो चलिए अब हम अगले वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 की अगर हम ध्यान दें, अगर उसे नोटिस करें, टीना ने एक स्कूटर परचेज करा 55,000 रुपीज में और उस पे 3,400 रुपीज स्पेंड करे रिपेयर करने के लिए, और उसने फिर उस स्कूटर को 56,030 में बेच दिया, तो उसे प्रॉफिट कितने का हुआ या लॉस कितने का हुआ। तो चलिए पता करते हैं। पहले हम पता करते हैं कि उसने स्कूटर कितने में खरीदा और फाइनली उसकी जेब से कितने पैसे खर्च हुए। तो उसने स्कूटर खर्च खर्च करते वक्त पहले अपने जेब से 55,000 रुपीज निकाले, और फिर उसने जब उसकी रिपेयरिंग वगैरह कराई तो उसने फिर अपने पर्स में से 3,400 रुपीज निकाले। तो ओवरऑल उनके पर्स से कितने पैसे निकले? 00485, इतने पैसे जेब में से निकले। और वापस पर्स के अंदर कितने पैसे आए? पर्स के अंदर पैसे आए हैं 56,030, क्योंकि उन्होंने इतने में उस स्कूटर को बेच दिया। तो बताइए, आपने स्कूटर खरीदा या उस पर खर्चा करा 58,400 का, और आपको रिसीव हुआ है 56,030, तो आपको लॉस हुआ है या प्रॉफिट? तो क्लियरली आपको लॉस हुआ है, क्योंकि आपने चीज महंगे में खरीदी और सस्ते में बेच दी। तो देखिए आपको कितने का लॉस हुआ है। 2370 का लॉस। तो करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों बी, ऑप्शन नंबर बी, जो कि 45 का करेक्ट आंसर। तो चलिए लेट्स मूव अहेड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू मेंसुरेशन। मेंसुरेशन वो चैप्टर का नाम है जिसमें हम एरिया और पेरीमीटर पढ़ते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? स्क्वायर पाथ is of side 50 meters. There is a path of 2.5 meters wide running all around it. The cost of leveling the path is rupees 10 square meter. तो बताइए उसका कॉस्ट क्या आएगा? तो बोल रहा है एक स्क्वायर है, ठीक है हम समझ गए एक स्क्वायर है, और एक स्क्वायर के साइड में एक पूरा पाथ कुछ इस तरीके से है, ठीक है। वो बोल रहा है कि इसका जो कॉस्ट आता है वो कुछ इस तरीके से आता है, इस पाथ को कवर करने का ₹10 पर स्क्वायर मीटर आता है। तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा? इसका एरिया निकालना पड़ेगा। फिर जो एरिया आएगा वो मीटर स्क्वायर में एरिया आएगा, और हर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 10 रुपीज है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका एरिया अगर आया 10 मीटर स्क्वायर, तो इसका कॉस्ट हो जाएगा 100 रुपीज। तो चलिए पहले हम इस एरिया को निकालते हैं। तो हमें क्या दिया गया है कि बीच वाला जो स्क्वायर है उसकी जो साइड है वो कितनी है? 50 मीटर्स। तो ये जो साइड है ये 50 मीटर की है, ओके। और जो उसकी विड्थ है उस पाथ की वो है 2.5 मीटर। तो चलिए मैं इसका अगर बेयर डायग्राम बनाऊंगा तो कैसा दिखेगा? इस तरीके का बाहर वाला पाथ होगा, इस तरीके का अंदर वाला पाथ होगा। अगर हम बाहर वाले एरिया, इस वाले स्क्वायर के एरिया में से इस वाले स्क्वायर का एरिया माइनस कर देंगे तो वो रोड का एरिया आ जाएगा, पाथ का एरिया आ जाएगा। पर बाहर वाले स्क्वायर की साइड्स क्या होंगी? चलिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इतनी तो होगी, 50 मीटर्स तो होगी, ओके। और इतनी एक्स्ट्रा होगी जो, सॉरी, लेट मी ड्रॉ अ बेटर डायग्राम, ओके, दैट वुड हेल्प अस टू अंडरस्टैंड बेटर। लेट्स सी, दिस इज द outer path, outer square, and this is the inner square, okay।
the inner square is 50 meters inside. Okay, so this path is 2.5 meter wide. So another 2.5 plus 2.5 would be added. So this side would be 50 plus 2.5 plus 2.5. So the side would be total of 55 meter of length. Okay, so the area of outermost circle square would be 55 into 55, and the inner one would be 50 into 50, right? Okay, so let's find out the difference, and the difference would be the area of the path in between. Okay, so let's calculate. 55 into 55, 5 5s are 25, 5 5s are 25. Okay, so this is the area of bigger square. Now let's find out the area of inner square. It is simple, it would be 2500. Okay, so if we find out the difference, how much difference will we get? The difference would be 525. Difference of these two would be what? If you subtract, you will get this. And this is in meter square because it is an area. And for every meter square, the cost is 10 rupees. Okay, sorry, the difference would be 525, not 5025. Okay, so 525 multiplied by 10 would be 5250. So option number D is the correct answer for the question number 46. So let's move ahead with the next one. 47th question. What does 47th question say? Which of the following rectangle has maximum area and how much is the maximum area? It's a very easy question. So maximum area is basically product of length and breadth. So either we quickly solve it. Okay, so let's quickly find out the area of each rectangle. First one would have 180 because 18 into 10 is 180. Second would be 14's square. 14's square is 196. Third would be 12 into 16. So 12 into 16, let's solve it quickly. 12 6 are 72. 12 ones are 12. 12 plus 7 would be 90. So it would be 192. Obviously, it is not the largest. Let's solve the last one, that is 17 into 11. 11 sevens are 77. 11 ones are 11. 11 plus 7 would be 18. So last one would be 187. So obviously the second option is correct, B with area of 196. So 47th has answer B. So let's move ahead. Now let's solve the next question, that is 48th one. A bicycle wheel has total of 24 spokes. The angle between a pair of the adjacent spokes is. Okay, so it's a very nice question. The question is such that there's a circle. Okay, so it has 24 spokes. Okay, so a circle has how many spokes? 24 spokes. So it has 24. Let me ask you one question. When there are three spokes, how many angles would be formed? 1, 2, and 3. Okay, 3 angles would be formed. Now let's say there are 4 spokes. So let's find out how many angles would be formed. 1, 2, 3, 4. When there are 5 spokes, 1, 2, 3, 4, 5, right? So the angles would be 1, 2, 3, 4, 5. So the number of angles would be equals to the number of spokes. So here number of spokes are 24 and the number of angles would be 24. 24 spokes means 24 angles, and those angles would be equal because spokes are at equal distance. You know this, right? Spokes are always on an equal distance. So 360 would be divided by 24. Both are multiples of 12. So 12 threes are 12 twos are. Further, if we solve, we get 15. So every angle would be of 15 degrees. Hence, the correct answer would be B for 48. Okay, let's move on.
the angle between the minute hand and hour hand at 6 p.m. It's a very nice question. So there is this clock. When the time is 6 p.m., the hour hand would be at 6 and the minute hand would be at 12. So the angle would be of 180 degree, and the angle which is 180 degrees is called straight angle. It's a very easy question. So that is why the correct answer would be D for 49. So let's move ahead for the next one. Okay, it's a graph based question. Another very interesting question. So what do we have to find? So question says the bar graph shows the number of questions solved by PQRS. So there are four candidates who have solved certain number of questions. From the above graph, find how many more questions Q and R solve together than P and S together. So first let's find out how many questions Q and R solved together. Okay, so Q solved how many? 6. R solved how many? 10. So they solved 16. And how many P plus S solved? So P solved 4 questions and S solved 8 questions. So it is true. So now let's read out the question again. How many questions, how many more questions Q and R together solved than P and S? So you see how many more? So they solved 4 more questions. So the answer is 4. That is why the correct answer would be A. Let's go. Find the difference between the greatest and the smallest 4-digit number formed using all the digits. हमें 4 डिजिट का एक नंबर बनाना है जो सबसे छोटा हो और जो सबसे बड़ा हो और वो इन 4 नंबर्स 4 डिजिट्स का यूज करा. तो सबसे बड़ा नंबर इस तरीके से दिखेगा 7420 और सबसे छोटा नंबर कौन सा दिखेगा इन चारों को यूज करके 0247. बट हम ये नहीं यूज कर सकते क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे. क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो नंबर है वो 4 डिजिट का होना चाहिए. ये 4 डिजिट का नंबर नहीं है, इसमें जीरो सबसे आगे आ रहा है. तो जीरो सबसे आगे आने पे ये 3 डिजिट का बन जाता है. तो इसे हमको थोड़ा सा बड़ा करना है. तो हम इसे थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो 2047 वुड बी करेक्ट आंसर. ओके, सो बोल रहा है कि इनका डिफरेंस बताइए. चलिए इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं. तो अगर हम डिफरेंस निकालेंगे 7420 और 2047 का, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा just one second. Okay, एक मिनट. I got a message, I need to reply. Kindly you solve it meanwhile. Just one second. Okay, so let's solve it. So if you do this, you get this. Okay, so the correct answer would be 5373. Hence option number C is correct answer. Let's move on. What does the next question say? Next question says in the question of division, if divisor is 51, okay, and the quotient is 16 and the remainder is 27, then the dividend is. So let's solve. What is the division algorithm? So what does division algorithm say? So when we do division, what do we get? We multiply quotient multiplied by divisor plus remainder is equals to dividend. Okay, so what the question asks? Question says what is dividend? So we'll write quotient की जगह पे quotient is 16 multiplied by divisor. What is divisor? Divisor is 51
and the remainder is 27. So let's solve this. See, if you solve this, what would we get? 16 ones are 16, 16 fives are 80, and the remainder is 27. So we add 27. So the correct answer is 843. Hence the correct option is A. So for 52, the correct answer is A. Let's move ahead. What does the question say? What is the prime factorization of 90? It's a very easy one. Okay. So you can use different methods. The most common method we use is this prime factorization method. So we make a shape like this, or so we divide it by 2, we get 45. We divide it by 3, we get 15. We divide it by 3, we get 5. We divide it by 5, we get 1. Okay, the correct answer is 2 into 3 to the power 2 multiplied by 5. So if you see, option number C is the correct answer. For 53rd, the correct answer is option number C. Let's move ahead with question number 54. What does the question number 54 say? Question number 54 says, which of the following is always a factor of every prime number? So every prime number has one factor common, is that is 1. Let's take, I'll give you one example. The correct answer is A. Let me give you an example. 3 is a prime number, right? So what are the factors of 3? 1, comma 3. 5 is a prime number. The factors of 5 are 1 and 3. So hence 1 and 5. So what is common in both of them? The commonality is 1. So the correct answer is 1. So let's move on to the next question. What does the next question say? Next question says, if this happens, then this is equals to what? So the question is asking basically, there's a pattern to it. Okay. So the pattern is such that what should we do with this so that we get this? Let's solve and try to understand. Let's try solving by first dividing it and then understanding whether the question is asking for division. 9432 divided by 125, 1.25. So decimal goes 100 comes out. So when we cancel it by 25, we get 4. 25 5s are 125. Now what do we get? Now let's solve. Okay. 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 9 4s are 4 9s are 36, 36 plus 1 37. Okay, now let's divide it by 5. So when we divide it by 5, 5 7s are 35, 5 5s are 25, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 6s are 30. So basically it is asking for the division. So how the question has helped us? Question has helped us by giving the actual calculation. So what is the calculation when it is when 943 2 is divided by 125? Okay. Now the only difference is the decimals. Okay. So now just let's try to understand decimals individually. Okay. So let me write down the answer first. Okay. 9 question first. 9432 is divided by 125 and we get 100 on the top. The same way what it is asking is 9432 divided by 125, and when we remove the decimals from the numerator we get, in denominator we get 1000 and in the numerator we get 10. So if we remove the decimals we get 100 at the bottom. So what if you try to understand this, if you want to make this from the first equation, if you want to make second equation, what you would have to do? First you would have to remove this 100 and you would require another 100 in the denominator. So if I multiply first equation, sorry, divide the first equation by 100, then the original 100 would be cancelled, then another 100, then I'll get this 100. So if I divide the answer of previous equation, that is the first equation, by 4 zeros, that means by 10,000, then I'll get the answer.
So what was the answer previously? Previously the answer was 7547 7 7545.6. Now I would have to divide it by 10,000. So the decimal would shift to 0.75456. So the correct answer would be option number B because it has the same answer. Let's move ahead. So let's see question number 56. The sum of 1.1, 1.01, 1.001, 1.01, 11.01, 11.1.1001. So let's write it down first, okay? So first one is 1.1, second one is 1.01, third one is 1.001, fourth one is 0.01, fifth one is 11.01, the last one is 111.1001. So let's try to solve it. I can add zeros, right? So it helps in calculation. That is why I have added zeros. So each number has four numbers after the decimal. Okay, four digits after the. So let's solve it. So 0001. So here I get 1. Here I get another 1. Here I get 3. And here I get 2. So let's see. 2311 is available after decimals in two options. So we would have to solve this one also. 1, 2, 3, 4, 5. I get 5, 2, 1 to 5.2311. 2311. So the correct answer is C. So let's move ahead. The next question is in regards to solving decimal. So the first number is 3. The second number is the second number is 0.03. The third number is how many zeros are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros are there. So 1, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So let me solve it once again so that it's very clear. So first one is 3. I can put n number of zeros after decimal. So I choose to put 6. So that calculation is easy. Okay. The next one is 3 divided by 100. So if you divide 3 by 100, you get 0.03. So basically the idea is the number of the zero, the number, let's say 3 is divided by 100. So you can assume that 1 is like a decimal and the zeros are like the real places. And 3 would come in the last place. So in 1001 is the decimal 003. 003. Here 0000 I put extra so that calculation is easy. Same way, the last one is how many zeros? 6 zeros. So 1 is the decimal 0000003. Okay, so let's solve it. 3 0 0 3 3 0.3. So the correct answer would be 3.033. 3.033. So this happens in only one option, that is option number B. The correct answer is option number B. Let's check once again. Okay, 3, after that 0.03, after that 0.003, after that 0.000003, 3003303. So that is why the correct answer is B.
Now the question is asking, what is the question asking? The simplest fraction that can be formed from 220.0925. So let's first write it out, 20.0925. So let's remove the decimal first. So when you remove the decimal, पॉइंट की जगह पे आता है 1 और फिर उसके बाद वाले नंबर 0 जैसे दिखता है। ठीक है, अब हम अगर ध्यान से देखें तो ये जो नंबर है ये 25 का मल्टीपल है, तो हम इसे 25 से ही काट देते हैं सीधे। नीचे वाले से 100 को 25 से काटेंगे तो 4 मिलेगा, बाद में 2 0 मिल जाएंगे। इस नंबर को अगर हम काटेंगे तो सीधे ये तो कटेगा नहीं, 2 नहीं कटेगा, 20 भी नहीं कटेगा, 200 कटेगा तो हमें 8 मिलेगा, फिर 9 की वजह से हमें 0 मिलेगा, 92 की वजह से हमें मिलेगा 3, फिर हमें मिलेगा 17 और 175 जो होता है वो 7 टाइम्स होता है। तो 8037/400 is the right answer. So the correct answer would be option number C. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Next question is very simple. And what does the next question say? Next question says 17 bottles of water, each 300 ml, and 30 bottles of juice, each 130 ml, are poured in a jug. The liquid in the jug is simple question, very simple question. So 300 ml की एक बॉटल है और ऐसी कितनी बॉटल है? 17 बॉटल्स है। तो 700 17 3 51। सो यहाँ पे हमें मिलेंगे 5100 ml। दूसरे केस में हमें कितना मिलेगा? 130 मल्टीप्लाइड बाय 130 ml की बॉटल्स को मल्टी कितनी है? 30 है। पहले 300 बॉटल्स 300 ml की 17 बॉटल्स थी, अब 130 ml की 30 बॉटल्स है। सॉल्व कर लेते हैं। 0 0 26, तो 2600 ml प्लस 5100 ml। अगर हमें ml कन्वर्ट करना है लीटर में तो हम उसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं। तो लीटर 1 कितने हो जाएंगे? 5.1 और लीटर 2 हो जाएंगे 2.6। तो जो टोटल होगा वो होगा 7.7। Some mistake, let me see what mistake we have made. Okay, the mistake is this, 13 3 is 39. Sorry, let me correct. 13 3 is 39. So if you add 39 and 51, what do you get? You get 9000. Total would be 9000 divided by 1000. The answer would be 9 liters. So the correct answer would be option number B. So let's move on. The another question, which is, this is a time based question. It is in regards to time. So the question, what does the question is asking? What does the question ask? Question says Suresh left his house at 9 a.m. and met his uncle to meet his uncle. He walked for 10 minutes, traveled in a bus for 1 hour and 5 minutes. So वो जब अपने घर से चला 9 a.m. पे, तो वो पहले बस से चला कितने घंटे के लिए? 1 hour and 5 minutes। कितने किलोमीटर कवर करे उसने? He walked 10 minutes, traveled in a bus for, sorry, पहले वो 10 मिनट पैदल चला, तो 10 मिनट्स वो पैदल चला, फिर उसके बाद वो 1 घंटा 1 hour and 05 minutes, सॉरी, इतना वो बस में चला। फिर देन ही वॉक्ड 15 मिनट्स, फिर उसने और 15 मिनट्स चला। ठीक है भाई, फिर उसने क्या करा? फिर उसने ही स्टेड देयर फॉर 3 आवर्स, फिर वहां पर 3 आवर्स के लिए उसने रेस्ट किया। 3 आवर्स के लिए वो वहां पर रुका, फिर 3 आवर्स एंड 20 मिनट्स के लिए वो वहां पर रुका। ओके, फिर वो, और वो घर पे 3:30 पर पहुंच गया। ठीक है भाई, वो पूछ रहे रिटर्न जर्नी का टाइम कितना है। तो चले इसको बड़े ध्यान से करते हैं। पहले तो हम पता करते हैं कि वो घर से निकला और घर वापस आया उसमें कितना टाइम लगा। तो वो 9 बजे चला और घर वापस कब आया? घर पूरा लौट के वो आया 3:30 9 AM पे चला और 3:30
So total time is 6 hours and 30 minutes. 3 hours, 6 hours and 30 minutes. तो 6 hours and 30 minutes में let's see how much of information is given to us. पहले हमें क्या कहा गया कि 10 मिनट वो पैदल चला, फिर वो 1 घंटा 5 मिनट बस में चला, तो टोटल टाइम अब कितना हो चुका है? 1 घंटा 15 मिनट। फिर वो 15 मिनट और चला, तो 1 घंटा 15 मिनट प्लस 15 मिनट हो गया 1.5 घंटा। ठीक है, 1.5 घंटे के बाद वो 1.5 घंटे के बाद वो 3 घंटा 20 मिनट वहां पे उसने रेस्ट किया। कितना? 3 घंटा 20 मिनट। तो 1.5 घंटा प्लस 3 घंटा 20 मिनट कितना हो गया? 1 hour and 30 minutes प्लस 3 hours and 20 minutes। सो टोटल टाइम इज 4 hours and 50 minutes। अब वो बोल रहा है कि आप बताइए कि उसने रिटर्न जर्नी में कितना टाइम लगाया। अच्छा बताइए कितना टाइम बचा है हमारे पास? हमारे पास बचा है 1 hours and 40 minutes। तो इस 1 hours and 40 minute में वो चल रहे होंगे रिटर्न आने के लिए। ये करेक्ट आंसर है 1 hour 40 minutes। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1 hours and 40 minutes। चलो लेट्स मूव अहेड। इसी के साथ हमारा पूरा पेपर मैथ का खत्म हो जाता है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दी कॉन्सेप्ट। और अगर आपको आपके एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो या आपके कोई और डाउट्स हो, तो आप कमेंट बॉक्स का यूज करें। आप डायरेक्टली माय ट्यूटोरियल इंस्टीट्यूट पर भी आ सकते हैं, और एल्स यू कैन कॉल अस। हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।